Very good morning to all. Today I'll be starting the last page of lesson 7, that is 208. We'll be learning the safety rules in a vehicle. The first one is stand in a queue while waiting for or boarding the bus, जिसमें आप Q को underline करोगे. QUEUE and then BOARDING. Then stay seated while the bus is moving. बस जब चल रही हो आपको बैठे बैठे रहना है. Take or talk softly so that the bus driver can concentrate on driving. हमें बस में चिल्लाना नहीं चाहिए कि इतने जोर के कि ड्राइवर को पीछे वाले या किसी की आवाज ही ना सुने. ओके, सो यू विल अंडरलाइन कॉन्सेंट्रेट मतलब ध्यान ध्यान से रहने का. डू नॉट लीन आउट ऑफ अ मूविंग बस. जब बस जा रहे हो ऐसे डोर पे ऐसे लटकते नहीं रहना चाहिए. ऑल्सो अंडरलाइन लीन, LEAN. Then always wear a seat belt when you are traveling in a car, especially if you are sitting on the front seat. हमारे यहाँ पे रोड पे ड्राइवर्स अगर सीट बेल्ट नहीं डाले तो दैट इज अ पनिशमेंट, है ना. तो फ्रंट सीट में जो भी बैठते हैं दे हैव टू वेयर अ सीट बेल्ट, क्योंकि एक्सीडेंट जब होता है ना तो आगे वाले ऐसे प्रेस हो जाता है एंड दे विल गेट हर्ट. तो सीट बेल्ट हो तो विल बी प्रोटेक्टेड. Okay, so the first one is stand in a queue while waiting for a bus or boarding the bus. Stay seated while the bus is moving. जब भी बस चल रहा है बैठे रहना है, ऐसे नहीं चलते रहना है क्योंकि गाड़ी ने ब्रेक ले लिया and then you will fall down. Talk softly so that the bus driver can concentrate on the driving. Do not lean out of a moving bus. Always wear a seat belt when you are traveling in a car, especially if you are sitting on the front seat. Okay, ये था अपना 5 points in a vehicle. The next is in the swimming pool. Swim only in the presence of an adult. Underline presence. PRESENCE. Okay. What do you mean by presence? अगर कोई बड़ा हो तो तभी स्विमिंग पूल में उतरना चाहिए, because you are very small. You are not supposed to just move about. Okay. So swim only in the presence of an adult. Use floats or rubber tubes if you are learning how to swim. जब भी आप देखना स्विमिंग में आप जाते हो ना, पहले आपको वो फ्लोट्स देते हैं या वो स्विमिंग ट्यूब देते हैं, बोलते हैं कि उसमें उतर के पहले ऐसे हाथ पैर ऐसे मारना सीखो, फिर आपका स्विमिंग क्लासेस शुरू हो जाता है. Right. So whenever you go to the swimming pool and if you are a new one, use the floats, underline floats, FLOATS, and rubber tubes also. Underline that one also. RUBBERTUBES. Okay. Never go to the deep end of a pool. Whenever you see a swimming pool na, you can see two sides. एक साइड वो होगा जहाँ पे बच्चे खेलते हैं एंड देयर इज अनदर साइड वेयर इट इज अ डीप पूल जहाँ पे बड़े स्विम करते हैं. यू आर नेवर सपोज टू गो ओवर देयर. दैट इज अ वेरी डेंजरस प्लेस. डू नॉट स्विम इन टैंक्स और पॉन्ड्स. इट इज नॉट सेफ. कभी भी छोटे टैंक से या छोटे पॉन्ड्स में स्विम नहीं करना. दैट वो बहुत बड़ा रिस्क है क्योंकि वो आपके स्विमिंग के लिए नहीं है एंड यू आर नॉट सपोज टू डू दैट. So first one is swim only in the presence of an adult. Use floats or rubber tubes if you are learning how to swim. Never go to the deep end of a pool and do not swim in tanks or ponds. It is not safe. May lesson I am going to take the exercise also. Okay. So the exercise, it is page number 209. First one is you have to choose the correct answer for each of the following. If you play with a knife or scissors, you might get cut. Okay, the answer is cut, CUT.
When the pedestrian light turns green, we should move. जब pedestrian light green हो तो आपको move करना चाहिए. Never take medicines unless prescribed by doctors. कभी भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना मेडिसिन्स नहीं लेना चाहिए. Never talk to the driver when he is driving. जब भी ड्राइवर गाड़ी चला रहे हो, never talk to him. So the first answer is cut, second is move, third is doctor, and fourth is driving. The next one is state whether the following statement are true or false. इसमें आपको true या false लिखना है. We should play on the road. That is not right. That is false. We can jump and dance in the classroom before teacher arrives. That is also false. आप मस्ती में करोगे तो सही, but कोई गिर जाएगा and कोई किसी को लग जाएगा. So that is false. We should not run in the middle of the road. That is true. Swim only in the presence of an adult. That is also true. In case you are hurt, you should not call anyone for help. That is false. अगर आपको कुछ भी हो जाए, तुरंत कोई बड़े लोगों को बुला लेना चाहिए. The next page, that is give one word for the following. Black and white strips painted on the surface of the road for safe crossing is the zebra crossing. It is called ZEBRACROSSING. An example of a sharp object, मैंने knife लिखा है, you can write scissors, whatever it is. People who walk on the road is pedestrians. जो रोड पे चलते हैं उनको pedestrians बोलते हैं. PEDESTRIANS. You should use this if you are learning how to swim. आप floats लिख सकते हो, rubber tubes भी लिख सकते हो. Okay. Now the next one is safety rules to be followed on the road. मैंने दो लिखा है. Never play or run on the road. Be alert and careful on the road. ये दो points I have written. Next is safety rules to be followed in the swimming pool is swim only in the presence of an adult. Never go to the deep end of a pool. With this I have completed this one. This activity I think you can do it. In the next one I will complete my new words and the question answers. Okay, thank you.